जी, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स जो है दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे। ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स में मेन चीजें सबसे पहले जो है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट डू वी हैव इन माइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द सोर्स इज, यू हैव टू नो कि सोर्स क्या चीज है। देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस के व्हाट इज द सिंक। ठीक है, एंड कीप इट इन माइंड कि सोर्स जो है वो क्या चीज है। सोर्स इज that part of the plant which is photosynthesizing or producing the food, or it is providing the food for the other parts that cannot complete their nutrient requirement. That is going to act as the source. And sink kya hai? Sink is that area which cannot produce the food, where photosynthesis cannot take place, or which which depends for its energy on the neighboring cells जो कि produce करें। जैसे कि रूट्स हैं, अंडरग्राउंड हैं, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द रूट्स। रूट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांस का मतलब शिफ्टिंग, लोकेशन का मतलब पोजीशन। शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ व्हाट? शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेट्स आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि हाउ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस गोइंग टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। यहाँ पर सिंपल हम ये देखते हैं फ्रॉम द लीव टू द रूट और फ्रॉम द लीव टू द फ्रूट। इसमें द टिश्यू दैट इज इन्वॉल्व क्या है? द टिश्यू दैट इज इन्वॉल्व इज द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो है, सॉरी नॉट द जाइलम टिश्यू, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज द फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, the phloem tissue is going to be involved in this translocation. phloem tissue किस चीज का बना हुआ है? different types of cells के बने हुए हैं। स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है। phloem tissue is made up mainly of the phloem parenchyma। लिख लीजिए, it is made up of the phloem parenchyma। I'm just brushing over the topic, I have already uploaded the lecture। ठीक है, phloem parenchyma है, it is made up of the sieve tube। ठीक है, सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स का बना हुआ है। फिर इट इज मेड अप ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्पेशल सेल, द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स का बना हुआ है। कंपेनियन कौन होता है? फ्रेंड होता है, और ये बहुत फेथफुल और बहुत सिंसियर फ्रेंड है। ये जो सेल है, इट इज अ फ्रेंड ऑफ एवरी सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर परफोरेटेड सेल्स। ठीक है, एंड वॉल्स इनकी क्या है? एंड वॉल्स इनकी परफोरेटेड है, दे आर परफोरेटेड। ठीक है, एंड कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद दीज जो है ना परफोरेटेड सेल्स, एंड दे प्रोवाइड एनर्जी। कंपेनियन सेल के 4 फंक्शंस जो हैं, आई हैव ऑलरेडी शोन यू द स्लाइड इन द प्रीवियस लेक्चर, वो आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। 2 मेन मेथड्स ऑफ ट्रांसलोकेशन है। एक मेथड है डाइफ्यूजन, which is also taking place inside the plant। ठीक है, डाइफ्यूजन की स्पेलिंग ये ठीक है गलत हो गई। ठीक है, डाइफ्यूजन which is also taking place inside the plant। एंड सेकंड आपके पास क्या है? सेकंड आपके पास क्या है? सेकंड हमारे पास जो है वो है बाय द मास फ्लो। ठीक है, मास फ्लो। मास फ्लो जो है, दिस इज अनदर मेथड, लेकिन वी डू नॉट कंसिडर डाइफ्यूजन। व्हाई डू वी नॉट कंसिडर डाइफ्यूजन? वी डू नॉट कंसिडर डाइफ्यूजन बिकॉज के डाइफ्यूजन बहुत ज्यादा स्लो है। इसकी स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिए, मुझे बताइए क्यों गलत लग रही है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जरा देख लीजिए बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा जी, क्योंकि इसकी जो है ना ये बहुत ज्यादा जो है वो स्लो है। जो डाइफ्यूजन का रेट है 1 आवर में 1 मीटर पर आवर जो है ये इसका स्पीड है। तो मास फ्लो जो है, दिस इज द मेन प्रोसेस बाय व्हिच मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हमने क्या करना है? हमने मास फ्लो का जो पूरा प्रोसीजर है ना उसको पढ़ना है।
ठीक है, कि मास फ्लो जो है वो कैसे हो रहा है. नाउ मास फ्लो, वेयर इज इट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम? द मास फ्लो इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंक, एंड यहाँ पर जो सिंक है, दिस इज द लीव. ठीक है, leaves में से it is going to start, then from the leaves it is going to pass on into the companion cell. पहले इसको इस तरह लिख लीजिए. Companion cells के अंदर conversion is going to take place. ठीक है, conversion is going to take place and the glucose is going to be converted into sucrose, which we studied in chapter biomolecules, that sucrose is the transport disaccharide. ठीक है, now sucrose will be shifted into the neighboring, it is going to be shifted into the neighboring, क्या कहते हैं, neighboring sieve tube element. ठीक है, it is going to be shifted into the neighboring sieve tube element. लेकिन क्योंकि sucrose heavy molecule है, so ATP is going to be required. And where is this ATP going to come from? This ATP is going to be produced from the companion cell. Now sucrose shifted into the sieve tube element. This process is known as loading. ठीक है, loading of the phloem. Loading of the phloem का मतलब कि उसमें वो भर रहा है. Now sucrose आपको पता है कि it is osmotically active. Osmotically active का क्या मतलब है? What is the meaning of osmotically active? कौन बताएगा? केमिस्ट्री पढ़ते हैं जी, बताइए. What is the meaning of osmotically active? ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है. तो क्या होगा? ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू create a very concentrated solution inside the phloem tissue, and the phloem and the xylem tissues, they are side by side, they are present side by side. तो क्या होगा कि to balance the osmotic potential, what is going to happen? Water molecules are going to they are going to pass into the phloem tissue passively. Passively का मतलब ये है कि एनर्जी उसमें नहीं लगेगी. Simple osmosis is going to take place. Water will pass from the xylem into the phloem tissue and it is going to dissolve the sucrose. Now when the sucrose has dissolved inside the phloem tissue, a lot of water is present and a very heavy solution has been produced. ठीक है, पूरी पिक्चर अपने सामने रखें. A very heavy solution has been produced, और इस heavy solution की वजह से water molecules will start to exert a pressure which we know is known as turgor, and high turgor pressure is producing a hydrostatic high pressure inside the phloem tissue. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक हाई प्रेशर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से क्रिएट हो रहा है. देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? This heavy pressure liquid, now it will start to move. Where will it move? It will move in that direction जहां पर pressure कम है, and the pressure is going to be lower in the sink areas. Sink areas में now it moves against the gravity also. It is not necessary कि ये only नीचे की तरफ आएगा. It moves up also, it moves sideways also, it moves in all directions. जहां पर भी pressure कम है, water has to move and it has to equalize the pressure. Pressure हो जाएगा, sink में आ गया. इधर आ जाते हैं वापस. Sink में जब वो आ गया, then what is going to happen? Now अब sink में we have a low pressure inside the sink. Now this liquid is present inside the sieve tube elements. ठीक है, it is present inside the sieve tube, and with every sieve tube element we have associated companion cells. ठीक है, now the companion cell is going to extract sucrose from the solution. It is going to extract sucrose from the solution, going to store the sucrose inside the structure now which is known as the sink. When sucrose has been extracted, तो क्या होगा? Osmotic potential decrease हो जाएगा, water extra हो जाएगा, dilute हो जाएगा. ठीक है, osmotic need कम हो गई. So what is going to happen? Water will reverse and it will move back to the xylem tissue. Xylem tissue में पानी वापस चला जाएगा, and this will continue into the from the source into the sink. sieve tube में बेटा आपके पास sieve tube के अंदर सुक्रोज solution present है. ठीक है,
सीव ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, सुक्रोज सॉल्यूशन जो है इट इज प्रेजेंट। अब हम जाते हैं टुवर्ड्स द स्लाइड में दोबारा से लगा रही हूँ, स्लाइड को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद छुट्टी। चलें जी, स्लाइड नजर आ रही है सबको? स्लाइड नजर आ रही है बेटा? कैन यू सी द स्लाइड? जल्दी जवाब दे दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए करें, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर अब आपके पास ये देखें, नाउ लुक हियर, किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीव ट्यूब। ये देखें, दिस इज द सीव ट्यूब एंड दिस इज द जाइलम वेसल, ठीक है? ये सीव ट्यूब है, ये जाइलम वेसल है, ये सुक्रोज है इनसाइड द कंपेनियन सेल। एटीपी यूज, नंबर 1 सुक्रोज शिफ्टेड हियर, नंबर 2 वाटर शिफ्टेड इनटू द फ्लोएम टिश्यू, ठीक है? Water shifted into the phloem tissue, heavy solution going to be produced, heavy solution produced, hydrostatic pressure बना, hydrostatic pressure की वजह से this is going to move to the area where pressure is less, ठीक है? Number 3 movement to the areas of lower pressure. Number 4 companion cell going to extract the sucrose by using ATP. ATP की वजह से यहाँ extraction हो गई, water moves back into the xylem and the process keeps on going on, ठीक है? ये आपके पास जो है ये टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? और अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे बता दीजिए।